welcome to the extra class English. And आज हम start करने वाले हैं with the newly included chapter in your syllabus, that is the third level by Jack Finney in your book Vistas. So you might be thinking यार ये chapter हमें पढ़ना पड़ेगा. Maybe it was eliminated because इसकी जो story line है it would be very boring. But on the contrary, let me tell you, this is a very interesting chapter. ज़्यादा बड़ा भी नहीं है. And at the end of it, I'm sure you will love it. So अगर मैं Jack Finney की बात करूँ, who's the author of this chapter, now he is the kind of person who basically loves science fiction and thrillers. So he is basically an American author जो इन सारी चीज़ों पे लिखते हैं, sci-fi, thrillers. These are the things that excites him. So he writes upon that, which is why he's written this chapter, the short story which is called The Third Level. Now I'm sure you might have seen this movie called Chronicles of Narnia. So what happens in that movie? We see that there's this small girl who goes, when these siblings are playing, वो जाके एक closet में छुप जाती है. And when she's stepping back, she by mistake या by chance, she enters into a different world, right? And that world is Narnia. So isn't it very fascinating? And हम भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस को इमेजिन करते हैं कि काश यार हम यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट हो जाएं, या हम एकदम फ्यूचर में चले जाएं, या अगर हमारा पास्ट बहुत अच्छा रहा है सो हम उस पास्ट में चले जाएं, या अपनी मेमोरीज को रीलिव कर लें, राइट? आई एम श्योर एवरीबडी माइट हैव फेल्ट दिस इन देयर लाइफ. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि हम यहाँ पे चैप्टर पढ़ने आए हैं, मैम नार्निया की बात क्यों कर रही हैं? बिकॉज दिस इज द मोस्ट रिलेटेबल स्टोरी दैट आई कैन टेल यू. The third level is similar to that basically. So the third level में भी जो main protagonist है हमारा, he basically discovers this new world. But this new world is set in past, and when this protagonist he discovers this new world, he finds it very pleasing. He finds it very nice to live in. He feels that ये हमारे present world से तो बहुत ज़्यादा better है, and he wants to stay there. And so he goes back, he tells his family, and he basically wanted to go and shift in that world. But he is not able to go back again. So in this chapter, हम यही पढ़ेंगे कि what this world was, who this protagonist was, and was he again able to go and visit that place? Let's start the story. Now, the protagonist starts the story by telling us that the presidents of New York Central, New York, New Haven and Hartford, they will basically swear on this fact that जो Grand Central है उसके सिर्फ 2 ही levels होंगे. So if you have ever traveled by metro, you would have seen that there are 2 levels, right? First, where you actually enter the station, right? And second is where you reach the metro. So इसी तरह से Grand Central में भी 2 levels हैं. This is what the protagonist begins to say. Then he goes on by saying that कि actually में तो 2 station है, but I am pretty sure and I am very sure about this that I have discovered a third one. Now when he says this, he also tries to tell you कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं insane हूँ या मैं पागल हो गया हूँ तो मुझे पता नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ. He says that I am telling what is the truth and I know कि ऐसा है. So lot of people जब उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला कोई चीज़ बता रहा है बट वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, तो what do we say? हम बोलते हैं ना कि यार पागल तो नहीं हो गए, are you mad, are you insane? ऐसा है ही नहीं, we can swear by. हम वहाँ से रोज़ जाते हैं, हमें तो सिर्फ 2 ही स्टेशन नज़र आते हैं या 2 ही लेवल्स नज़र आते हैं. How is it possible कि तुम्हें एक नया सेंट्रल या तुम्हें एक नया बेसिकली लेवल मिल जाए? It's not possible. Which is why he does not want, who? The protagonist, he does not want the reader कि हम उसे जज करें कि वो insane है. Which is why he says that मैंने पहले ही अपने psychiatrist से बात कर ली है, I am completely fine, और ऐसा नहीं है कि मैं escape कर रहा हूँ अपनी reality को. Now, why do we escape our reality? हम अपनी reality को क्यों escape करते हैं? The protagonist says that the world which we live in right now, this world is full of fear, it's full of anxiety, and it's not a happy place to be. So now let me tell you, जो इस story की setting है, it's somewhere near 1890s. So अगर ये 1890s की setting है, so 20 years away from the First World War
एंड अराउंड 40 years away from the Second World War. So उन सबसे पहले की सेटिंग है एंड ही सेज दैट कि ये जो प्रेजेंट वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं, इट्स सो हसल बसल, यू नो एवरीबडी इज़ बिजी इन देयर ओन बिजनेस, सारे यहाँ पे फियर, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से सराउंडेड है. तो मैं एस्केप नहीं कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को. आई नो दैट दीज आर दीज थिंग्स. मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी और दुनिया में जा रहा हूँ अपने माइंड से, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से बचना है. दिस ही सेज ही इज़ नॉट बेसिकली डूइंग. ही सेज दैट ऐसे तो मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो स्टैम्प कलेक्शन करते थे एंड इसीलिए मैं भी स्टैम्प कलेक्शन करता था. बट वो भी एक रिफ्यूज नहीं है मेरा, एक टेम्परेरी रिफ्यूज नहीं है मेरा. अगर मेरे ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो एस्केप कर रहे थे रियलिटी से. वो क्यों अपनी रियलिटी से एस्केप करेंगे? क्योंकि उनके टाइम पे तो ये वर्ल्ड और भी ज़्यादा हैप्पियर प्लेस था, राइट? और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बिकॉज आई ऑलरेडी नो एंड आई ऑलरेडी मेट माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑल्सो. Now, while you're reading this, you might think that this protagonist is insane, which is why हम उसको जज ना करें. प्रोटैगनिस्ट ने इस पूरी स्टोरी में इस तरह से बार बार ऐसे नुआंसेस रखे हैं जहाँ पे he says and he tries to prove that कि yes, I know this is real and this I know is not real according to you. So he knows the difference and he is perfectly sane. So after giving us this background, he starts that anyway, अब कोई भी कुछ भी सोचे मेरे बारे में. So let me start by telling you what actually happened and ये सब क्या हुआ कि मुझे third level मिला and all that. So he says that once I was, you know, मैं ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया, so I really wanted to go and I want to spend time with my wife. So उसने जल्दी से ऑफिस से निकला and he said that I took a subway from the Grand Central. And why he took the subway, he says मैंने subway इसे ले लिया because it was faster than the bus. So he says that now by telling his name and his age and his wife's name. So his name, age and his wife's name is important. His name was Charlie. His wife's name was Louisa and he was 31 years old. This is what he says. So he says that जैसे ही वो first level पे पहुँचा, वहाँ पे जाके वो देखता है, he sees these trains and everything, they are of 20th century. Then he walks down to the second level. अब ये second level जो है, he says ये suburban लगता है, right? So ऐसा लगता है कि हाँ, ये भी present style का ही है. And then he decked down through the arch and he says that now I'm completely lost. So what he is saying that यहाँ पे वो again imply करता है that if I'm lost, it's not something that मैं insane हूँ, right? Because normal people get lost. Even I get lost. People basically हम क्या कहते हैं, भीड़ में गुम हो जाते हैं, या people basically normal people can get lost. So यहाँ पे आपको throughout the story ये बात ध्यान रखनी है that the protagonist is trying to bring the reality and trying to basically go parallel with it. He knows that he's telling you something that you might not believe, which is why he's again and again implying what? He is again and again implying that he knows the reality also. Then he says that मैं around 100 times आ जाता हूँ इस Grand Central के आसपास. 100 times I have, you know, been there because obviously he works in an office, रोज वहाँ से आता जाता होगा, so you're already very familiar with your surroundings, right? Just like you're familiar with the surroundings of your house, right? So he says that मैं इतनी बार आता जाता हूँ, but it's always that मैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी new doorways मुझे दिख जाते हैं, new staircases मुझे दिख जाते हैं, and it's something that I really discover. So again यहाँ पे ये कहता है before actually moving to the third level, इससे पहले भी इनके साथ ऐसा हो रखा है that he basically gets lost somewhere and नई नई चीज़ों को वो डिस्कवर करता है, नई प्लेसेस को वो डिस्कवर करता है, right? So again bringing the reality point here that has happened with him before and which is why he is implying that this is not something insane that I'm talking about. He says that एक बार ऐसा ही हुआ था कि मैं एक लॉन्ग टनल के अंदर चला गया था and then I came out of the Roosevelt Hotel. उसकी जो स्टेयर्स है मैं बाहर आ रहा था. So I don't know how this happened. ये कोई सीक्रेट टनल थी, क्या था? बट मेरे साथ ऐसे पहले भी हो रखा है कि मैं कहीं और ही जगह पे पहुंच जाता हूँ and when I come out I see it's a completely different place and somewhere that I did not intend to be. So he says that this has already happened to me. Now he says that ऐसा लगता है उन्हें कि ये जो Grand Central है, this is basically what? This is basically some kind of a tree जिसकी जो roots हैं बहुत different जगह पे जो है spread कर रही हैं. And जो ये roots हैं, they are like some sort of tunnels
जो किसी नई जगह के लिए एक डोरवे है. दिस इज व्हाट ही ट्राइज टू से.